You have that one and a half minute to have that breakfast, or whatever you can eat, तुम जल्दी से ठूसो उसको। हर्ड कि सर बिपिन रावत जो है, मतलब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, लाइक विद हिज वाइफ, एंड आपके चाचू भी थे लाइक उसमें। तो क्या आपकी कभी अपने चाचू से डायरेक्ट बात हुई है कि उनका कोई एक्सपीरियंस हो विद बिपिन रावत सर? लाइक डॉक्टर हैड गॉन क्रेजी नट्स कि भाई इस बंदे ने कैसे 30 kg कम कर दिया 48 डेज में। एंड फिर उसने मेरे को बोला, खाल से तू पागल है, हमें पागल खाल से ही चाहिए फौज में इस समय, तू जा आर्मी में जा। उसने मेरे को फिट करके भेज दिया। अच्छा। एंड जैसे ही मैं बाहर गया मैं बेहोश हो गया। फिर मेरे को ड्रिप लगाई गई, और वही डॉक्टर ने ड्रिप लगाई गई। मेरा सपना था, पैशन था कि कुछ भी हो जाए मेरे को जाना है। अगर मेरे को पैर भी काटने को बोलेंगे मैं काट दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को जाना है। तुम सोचते हो कि यार मैं सीनियर बनूंगा ना, मैं नहीं करूंगा ऐसा, मैं नहीं झगड़ा दूंगा। और जब तुम सीनियर बनते हो तुम साला रियलाइज करते हो कि तुम डबल दे रहे हो जितना तुमने रिसीव किया। काफी भारी क्वेश्चन। इंडिया माइट नॉट हैव द नंबर्स टू फाइट चाइना, ठीक है। वी माइट नॉट हैव द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, वी माइट नॉट हैव द बेस्ट ऑफ the aircraft, we might not have the best of the aircraft carriers, but what we have is our men. India की ताकत उसकी फौज है, and that why is very important. So yeah, that was my experience. So this, everything continues for 3 years. So yeah, yes, it's even difficult to imagine. जय हिंद दोस्तों। सो आज हमारे पॉडकास्ट पे बहुत स्पेशल गेस्ट आए हैं जिनका नाम है सिमरत सहोटा। ही इज ex-NDA एंड ही इज फ्रॉम 139 कोर्स। हाय सिमरन, हाउ आर यू? हाय मिहिर, आई एम गुड, हाउ आर यू? डूइंग ग्रेट। एज आई हर्ड कि NDA एग्जाम जो है लाइक UPSC कंडक्ट करती है, एंड इट्स काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट एग्जाम। सो हाउ डिड यू टैकल्ड योर एग्जाम? Actually, I was in my 12th when I first realized that this is what I wanted to do. So I thought of applying for NDA, and I applied. And uske baad, I was very weak in mathematics. Like I had got 7 CGPA in my 10th in mathematics. So upgrade होके 8 हुआ because मैं sports खेलता था उस समय, तो काफी वो 8 हो गया। And मेरे को मैथमेटिक्स PCM भी मिल गई APS पटियाला में। एंड वहां पे मैं गया तो मेरा एकदम धागा ही खोल दिया उन्होंने कि मैथमेटिक्स तो किसी से ना हो पाएगा। फिर मेरा एक टीचर था रमन राणा, उसने मेरे पे बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा ही मेहनत की उसने मेरे पे। इंडिविजुअल अटेंशन देने लगा, वो भी इवन व्हेन आई डिडंट आस्क फॉर इट। मैं आई वाज लाइक ट्राइंग टू बंक एंड ऑल, फिर भी कान पकड़ के ले आता था मेरे को, साले पढ़ने बैठ जा। एंड दैट गाय चेंज माय लाइफ एक्चुअली, टू बी वेरी फ्रैंक। उसने मैथमेटिक्स का जो डर था अंदर, तो मैथमेटिक्स का फोबिया था, वो ही हटा दिया। उसके बाद व्हेन आई केम टू 12th, I applied and all, so I had like 3 months with me. So in that first I did my NCRTs. I made sure that my syllabus is complete 11th 12th में, because let's say अगर आप 12th में appearing कर रहे हो आप, let's say September वाला पेपर है, so अगर if you attempt that paper, even when your syllabus is not complete, then you are already at a disadvantage. Let's say you leave probability and statistics और उससे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, so you are already you have lost the battle for 20 questions. You are competing out of 100. So syllabus completion is a must, ठीक है। People going for कि sir important topics कौन से हैं, they have already lost the battle. So this has to be keep in mind. After this, when my NCRT got completed, I picked up RS Agarwal. So RS Agarwal gave me confidence because question comparatively, they were moderate and उसमें solved थे questions. तो फिर मैंने RS Agarwal complete की, and उसके बाद Pathfinder से previous year questions practice किए, and formula में सारे रट लेता था। 3 months लगे मेरे को, बट I made sure कि मैं एकदम घोल के पी जाऊँ उसको। तो एक दवाई बना के मैंने उसको पी लिया फॉर्मूलेस की, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट। एंड इवन मैं वॉशरूम एंटर कर रहा था, मैंने वॉशरूम के बाहर फॉर्मूले लगा रखे थे। तो मैं से अपने आप को टेस्ट करता, मैं तभी घुसूंगा अगर मैं 5
सही करूंगा, और कभी कभी मैं नहीं भी सही कर पाता था, फिर मैं याद करके जाता था अंदर, लेकिन वो एक हैबिट बन गई थी। तो तो ऐसे करके आई मेड मेनी फनी रूल्स कि रूम एंटर करना है तो हाँ 5 फॉर्मूले सुनाऊंगा ये वाले, फिर वहाँ बाथरूम एंटर करूंगा 5, किचन एंटर करना है तो 5, फ्रिज खोलना है तो 5, मतलब ऐसे करके मैंने अपने रूल बना रखे थे। एंड दैट रियली हेल्प मी, इतने सारे मैथ्स के फॉर्मूले थे और मैं थोड़ा तारे जमीन पर टाइप बच्चा था, तो actually, when in my earlier days, I had some speech problems, and I was kind of dyslexic. So I was like very weak kid, but धीरे धीरे I was lucky. People worked on me, and I also paid them the results. Then ये तो हो गया maths का. I did like this. फिर English का I attempted previous year question paper and was very generic. I solved around 37 were correct previous year ke. So I left it at that. I didn't prepare anything for English. And but for people who are like who want to work on their grammar, so I would suggest we start reading newspapers and all. And also there's a book called Wren and Martin, beautiful book for grammar. So you can refer to that. Then there's a book called SP Bakshi. Even that is good from great book for English. Then physics, chemistry, biology, I did from Pathfinder, and I think that was enough because GAT may 150 questions are there. So if you do English, physics, chemistry, biology, so you are already targeting 100 questions. Correct. And whereas you battle it is of only these 100 questions, because especially for a science kid, because you can't go into the depths of history, geography, economics syllabus. The syllabus is so huge. Yeah. So if you have time, like if you have 2 years and all, then you can refer to NCRT geography, NCRT history books. But otherwise, I don't see you guys preparing for GAT. If you want to work on your merit score, you are most welcome. So this is the way I prepared. वैसे daily newspaper में पढ़ता था, so my current affairs was also good. So now from 100 questions, I moved to 110. So I targeted these 110, and around my 75 to 80 questions were correct. And if I remember, so I got like 383 when I got recommended. So, okay. So काफी लोग जो हैं लाइक आर्मी का जब वो सुनते हैं वो प्राउड होते हैं, राइट? बट उनको एक्चुअल में लाइक एग्जाम क्लियर करने के बाद जो हमारी ट्रेनिंग होती है उस एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा लाइक कम क्लैरिटी है लोगों को. सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द 3 year ट्रेनिंग जो कि आपने ली थी एनडीए से? Training was great, yeah. Training was wonderful. It was like the hell that I was looking for. Okay? All hell broke loose when we entered the academy. Okay? It was like we were almost treated like shit initially. Okay? But that's what training is. That they will break your attitude. They will break you to the limits that you didn't know that it existed. ठीक है, पता ही नहीं था कि ये लिमिट भी एग्जिस्ट करती है कि मैं इतना ये सब कर सकता हूँ. करेक्ट. तो आज की डेट में जब मैं बाहर आया हूँ तो मेरे साथ कुछ बुरा होता है. लेट्स से there was a time when I stopped walking and all, so that time डॉक्टर सेड कि यार नहीं हो पाएगा तेरे से वॉक. तो आई सेड यार इससे बुरा तो मैं झेल चुका हूँ. राइट. सो दैट इज द काइंड ऑफ माइंडसेट दैट यू हिट. यार इससे बुरा तो मैं झेल चुका हूँ. ठीक है, मैं रोवर्स कर चुका हूँ, मैं एकेडमी में आई हैव ट्रेन फॉर 3 years. क्या ही कर लेगा मेरे साथ खुदा ऊपर वाला. सो दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इट बिल्ड्स इन यू एकेडमी, and the kind of camaraderie, bonhomie which is given to you. I went to academy with one brother. I came out with 19. So that is the kind of camaraderie that I have. Now I'm more closer to my course mates than even my real brother. So that is the kind of camaraderie. आज भी कहीं भी वो होते तो कॉल करते हैं. लाइक वन ऑफ माय कोर्स मेट्स ही इज एट द आईबी, सो वो मेरे को कॉल करता है कि ऐसे ना वीडियो कॉल दिखा के ये देख 20 मीटर दूर पोस्ट है इनकी. रेडियो पे अंताक्षरी खेलते हैं.
तो ऐसे अच्छा करके नाउ ओके हाँ तो बहुत अच्छी अच्छी बातें और जब वापस छुट्टी पे आते सो वी लाइक मीट एंड हैंग आउट टुगेदर एंड दैट इज द काइंड उनके घर में कोई शादी होती है तो हम चले जाते हैं, हमारे घर में होती है तो वो आ जाते हैं ऐसे इट्स लाइक एंड देयर पेरेंट्स आवर पेरेंट्स आल्सो नो कि यार इनका कुछ नहीं हो सकता, एक्स एनडीए लोग हैं, करेक्ट ये ऐसे ही है. So that is the kind of relationship. Academic 3 years was very tough. Tested to every limit academically, physically, emotionally, mentally. But this is what training is all about. सुबह routine generally first term में ऐसे होते हैं, you wake up at 3 and अच्छा you go to your overstudy and your overstudy he takes he trains you a little bit, थोड़ा बहुत जोश भरता है तुम्हें and then he leaves you at 4, then you come back to him at 5 with your all the rigs for the day, all the shoes, then something is wrong in them naturally because it is meant कि you come back to them with your uniform और वो कुछ गलती निकाले उससे और जैसी गलती निकाली again 1 hour. This is the kind of loop academy में जो होता है. तो अच्छा फिर 5 to 6, फिर 6 o'clock he will leave you, then you will come back and get ready and then फिर मस्टर होगा तो प्री मस्टर होगा तो प्री मस्टर में फिर से कुछ गलतियां निकलेंगी, फिर तुम्हारा रूप शुरू हो जाएगा, फिर you will be left for PT drill or academic sometimes or riding. So PT drill करके आगे तुम और फिर उसके बाद वापस से तुम 8:30 you have come back now, 2 घंटे की ड्रिल या पीटी करने के बाद you are like you are hungry, you need food and राइट muscles are sore, but to enter the squadron you have to first meet your overstudies. So overstudies will say remember in the morning you did this. Yes sir. ओके ओके Okay, then start rolling. So again that loop will start. अगेन Then he will leave you few minutes before the breakfast. You have that 1.5 minute to have that breakfast or whatever you can eat. तुम जल्दी से ठूसो उसको, रेस्ट तुम रास्ते में अपना सैंडविच डालो, पॉकेट में डालो और निकलो वहां से. And when you go back again you get those 3 sergeants, then again you satisfy them, then again you Oh my get god. on your bike, Loop. you It's a get on loop. your bike, then you again get on your bike, that is bike is like cycle, so that there it is called bike. So you get on your bike and then there is something called HOR clearance, so you have to clear that within a specific period of time, so naturally you're running late and you will get late there. Okay. So Saab will take your eye slip and you will get 3 more EDs, or this is called like punishment. Okay. So this loop is like never ending. Okay. Academy life is very fast paced. Then you'll go in classes, naturally you will be tired because you've been running around since 3. So घंटा की पढ़ाई होगी, you just sleep to away to glory. You sleep from 9 to 1, 9 to 2, और फिर उसके बाद you will come back to your squadron and फिर उसके बाद you will have your lunch. वहाँ पे lunch पे फोर्थ टमर्स बोल रहे होंगे have fast because apparently there is a cross country practice for you which is waiting for then you will come back to squadron. पहले 1 घंटा पीटी होगी, फिर उसके बाद 1 घंटा क्रॉस कंट्री प्रैक्टिस, फिर 2 घंटे या 1.5 घंटे के आसपास कोई गेम खिलाई जाएगी लाइक फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल. अच्छा और फिर उसके बाद 7 तकरीबन 7 या 6:30 तक मूव इन हो जाएगा. 6:30 तक जनरली मूव इन हो जाएगा एंड 6:50 तक स्टडी पीरियड. अगेन वहाँ पे 10 मिनट टू चेंज, टू हैव बाथ, वॉश योर क्लोथ्स. Time is very less in India. So 6:50 tak you settled. You will get settled for study period. Then you will sit down for study period for 1.5 hours. Then anteroom procedure will be there. So in that anteroom procedure में क्या होता है, सारे कैडेट्स स्क्वाड्रन के आते हैं और CSM और SCC जो सीनियर मोस्ट होते हैं, तो सारे कैडेट्स की मतलब जो दिन के पाप हैं, जो दिन के क्या बोलते हैं सारे उन्होंने गलत काम किए वो बताए जाते हैं और फिर उनको पाप का पश्चाताप करना पड़ता है. तो फिर पापों का पश्चाताप होता है और फिर डिनर मिलता है. और डिनर इज लाइक वन मील इन इंडिया, एटलीस्ट इन माय स्क्वाड्रन, इंडिया स्क्वाड्रन, जहाँ पे कोई किसी को तंग नहीं करता बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि हो सकता है कि बंदे का ब्रेकफास्ट छूट गया और लंच भी छूट गया हो सकता है. तो डिनर इज वन मील वेयर जैसे ओके यू जस्ट कैच अप. ठीक है. सो नो वन विल ट्रबल यू, यू हैव योर फूड एज मच एज यू वांट. But naturally, there's a specific time, around 15 minutes, which is more than enough for any cadet to have their food to glory. But again, you have to keep in mind that after you go back from there, so
there is a 1 hour PT session Hmm. and 2 hour Ragda session waiting for you. Again. So you can have only that much, yes. Hmm. So you can have only that much so that तुम्हें vomit ना आए. Hmm. So you have that in control manner and then you go back. Hmm. And 1 hour normal PT is there with scon time. And then as soon as you are going to sleep, कि तुम 3 बजे से जागे हो 10 बजे तक भाग रहे हो, Hmm. and जैसे ही तुम्हारा पिल्लो का टच होगा ना, खत्म. so there will be a kick on your leg, a kick Right. on your door कि ओवर स्टडी विल कम. ठीक है, बोलेगा कि साले यू वांट टू स्लीप, get up, Oh. start rolling. Then overstudy is like the third tower. So he will like take you to glory. ठीक है, वो तुम्हें he will give you through and through bamboo. And जब तक उसको satisfaction नहीं मिलेगी, तब तक वो छोड़ेगा नहीं. It can be half an hour, it can be 1 hour, it can be 2 hours, it can be 3 hours. Oh. Sometimes it happens he will take you to washroom, tell you to call all your postmates. All postmates are in there in some washroom at 12 or 1 o'clock in the night. So, this is the kind of training which makes you Hmm. uh, like you can't be defeated. You Hmm. can't be defeated in life, rather. Like when I come when I came outside now, Hmm. so I was there in this internship with Reliance. So there, एक Reliance में एक लड़की थी. So she said, "यार, my sleep cycle is completely fucked." ठीक है, Hmm. one of my kind of colleagues. So that's why I'm leaving this internship. So Hmm. I was like, what is sleep cycle? बोलते you're supposed to sleep between you're supposed to sleep between 10 to 8 and get 10 to 6 and get 8 hours of sleep properly. Right. So I laughed so much on her face only. Then she left and she called me some words like misogynist or something which I don't care. Okay. So that is the kind of, and I just couldn't stop laughing. I just couldn't stop laughing. And then one of these guys said कि यार हमारे food meal के timing miss हो रहे हैं. He raised this point in the meeting to the administrator कि जो अच्छा. हमारा lunch break है या जो हमारा breakfast break है वो delay हो रहा है. अच्छा. And I was like कि सालो तुम्हें मिल क्या तो हो रहा रहा है कम से है? कम. हाँ, बात तो मिलता है. So half an hour for lunch break. I feel like, but chalo, it's the way life is outside, so you have to get adjusted now. Hmm. And but the beauty of the part is when you become when you are a junior, तुम सोचते हो कि यार मैं सीनियर बनूंगा ना, मैं नहीं करूंगा ऐसा, लेकिन मैं नहीं कर रगड़ा दूंगा. और जब तुम सीनियर बनते हो, तुम साला रियलाइज करते हो कि तुम डबल दे रहे हो राइट. जितना तुमने रिसीव किया. So that is like the most beautiful part of the process. You understand when you become a senior ki why I was getting that, Hmm. and that why is very important. So yeah, that was my experience. So with this, everything continues for 3 years. So yeah, it's Yes, even naturally. difficult to imagine what the situation. Yes, like first, second, third term mein generally this is the routine, अच्छा. and fourth term mein what happens? You become a little senior now. Hmm. So you will not be given ragda in public. Hmm. So अच्छा. naturally, what happens? Ki you will be called at night, Hmm. like between 12 to 3, and अच्छा. that is like the worst part. That is even worse because Hmm. what happens is ki 12 to 3 is that now that beautiful phase of sleeping, Right. Right. right? Right. So in that time, if you're getting ragda, then your next whole day is fucked. Right. So Totally correct. ये तो वहीं पे पूरा दिन वहीं पे बिगड़ जाता है. And sometimes it happens कि it starts from 10 to 5 at night Oh. because they can't give you ragda in the morning in front of juniors. समझ So गया. no movement is announced in squadron. Hmm. No junior will move now outside of their cabins, Hmm. so that fourth termers can come outside and वो भी अपना पापों का पश्चाताप करें. Got it. So well, life becomes chill from fifth term onwards. Fifth term में no one can screw you except the officers and the ustads. Hmm. So seniors तुम्हें बजा नहीं सकते. तो seniors at most what they can do with you is that they can call you. You will stand in front of them and they will talk to you. Hmm. ठीक है. So they will talk to you like for 1 hour, for 2 hours. So Hmm. that is the kind of maximum ragda which is a fifth termer gets. Sometimes they will call you deload and what doesn't matter. Just talking is there. Just talking. Hmm. And sixth term mein it depends on your scon office. Like our scon office was
like commando course. So they have taken us like through and through. We have got more ragda even from our second third term, I would say. So our system was comparatively tougher, but sometimes in some cases I've seen कि SCON office is absolute chill. वो अपना Sunday Saturday enjoy करते हैं, तुम्हें भी करने देते हैं. हमारे टाइम पे SCON office Sunday को भी हमारे SCON में ही रहता था, ताकि क्या नहीं हमको करता देखता है रहे वो. वो. So it depends, but all in all सबको इक्वल शेयर मिलता है ऑफ रगड़ा, irrespective of which form you are. ठीक है. So guys who are like were constantly messaging me कि सर कौन सा स्कॉन अच्छा है वगैरह. So all स्कॉन में इक्वल है, आज नहीं तो कल सबको मिलना ही है. So जो इक्वल अमाउंट ऑफ रगड़ा है वो मिलेगा ही. So don't think about that. So रगड़ा इज लाइक अ कर्मा, वो सभी को मिलेगा. Yes. वो पापों का पश्चाताप है, वो भरना पड़ेगा सबको. सो आई हर्ड कि जो इंडियन स्क्वाड्रन है उसमें कुछ 7 ट्रेडिशन होती हैं, जैसे कि आई गेस चेंज नहीं लेना या फुल नेम से बुलाना. आई सॉ योर पोस्ट ओनली, इंस्टाग्राम पोस्ट. सो उस पे आप थोड़ा सा इलैबोरेट करोगे कि व्हाट आर दीस 7 ट्रेडिशन? Sure. So like I was very lucky that I got India Squadron because my father was also from India Squadron. So he had joined NDA in 1987 and he had got India. और NDA में क्या होता है, पेरेंटल क्लेम और ब्रदर क्लेम नाम की एक चीज होती है. So if your brother or your father is from any squadron, so you will also get that squadron. So I joined India Squadron and 7 traditions. जैसे इंडिया स्क्वाड के बड़े सुंदर ट्रेडिशन है, unlike many others. काफी स्क्वाड में ट्रेडिशन है कि जैसे डिनर टेबल पे ग्रीन कुछ भी नहीं खाना, और मिरर यूज नहीं कर सकते, वो सिंक यूज करके शेव करना. लेकिन इंडिया स्क्वाड इज लाइक जेंटलमैन स्क्वाडन. ऑन द फील्ड सब रगड़ा फील्ड पे खत्म हो जाएगा. तो ऐसी कोई चीजें पे परेशान नहीं करेगा. ऑन यूजिंग यूरिनल्स, ऑन यूजिंग जेंटलमैन लाइक कंडक्ट होता है. रगड़ा पूरा मिलता है, लेकिन ये सब फालतू के काम नहीं होते. सो जो इंडिया स्क्वाड की ट्रेडिशन है, जैसे फर्स्ट एडिशन इज इंडिपेंडेंस डे ट्रेडिशन. So what happens is 14th को all juniors, that is first to third termers, are prisoner of wars. And they have to earn their way to freedom. So पूरे दिन रगड़ा मिलता है, और फिर CSM mid term mood announce कर देता है. So mid term mood is something like कि all first to six termers are equal in mid term mood. So no ragda, no pressure, nothing. You are a six termer in first term if you get midterm mode. So midterm mode is like very nice because उसमें तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल सकता. हमने केबिन में सोते रहो पूरे दिन. ठीक है. वो बहुत बढ़िया रहता है. एंड फिर 15th को इंडिपेंडेंस डे मिलता है, एंड फिर जैम सेशन इज देयर. तो जैम सेशन में होल स्कॉन कम, दे सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे. तो इंडिपेंडेंस डे हमारा ट्रेडिशन इसलिए बिकॉज वी आर फ्रॉम इंडिया स्क्वाड्रन. So as name suggests. Correct. And then second is Punjabi festival tradition. So when NDA was made, तो उस समय इंडिया स्क्वाड्रन की बिल्डिंग के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए दिए थे, उस समय के 1 लाख रुपए. So उन्होंने क्या किया, पंजाब हमारे स्क्वाड्रन के बाहर लिख दिया. अगर तो if you see my स्क्वाड्रन बिल्डिंग, then you will see कि स्क्वाड्रन के बाहर पंजाब लिखा हुआ है. So पंजाबी फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, लाइक बैसाखी, लोहरी एंड गुरपुरब. वी गो टू द गुरुद्वारा, एंड irrespective of Hindu, Muslim, anyone, you have to go to Gurudwara because you are from India. So you go there and you pay your respects. So this is the kind of thing which is taught in the army, irrespective of religion. Your religion is what your men's religion is. So and what your traditions are of the Pulton, of the squadron, anything. Then third is change tradition. So change में क्या होता है, if senior gives you some money, कि यार मेरे लिए ये ले आ, समोसे ले आ, जलेबी ले आ, then rest of the money is yours. He can't ask change. अच्छा, initially it was कि 10 rupees से कम चेंज होगा तो वापस नहीं देना. But like juniors realized कि ये चिंदी पना कर रहे हैं, so they themselves made this rule. एंड अब ऐसे ही होता है कि चेंज वापस ही देना होता. तो इसे सोच समझ के सीनियर्स को पैसे देने पड़ते हैं कि चेंज कितना बचेगा उसके लिए. तो समटाइम्स इट हैपेंस कि जो सीनियर 100 रुपए की चीज के लिए 100 रुपए ही दे रहा है उसको,
तो जूनियर बोलेगा सर ये 20-30 रुपए की चीज नहीं मिली मेरे को तो मैंने खा लिया इसका. He will take his chair irrespective of whether you get your stuff or not. हाँ, So, that is like very beautiful. फिर एक पुडिंग ट्रेडिशन होता है हमारा. So अगर तुम्हारे सामने तुम्हारा सीनियर बैठ गया टेबल पर इंडिया स्कॉन का ही, अच्छा. so you have to forego your pudding. So that junior will have your share of pudding. So ओ. अब pudding like gulab jamun and हाँ. shahi tukda or jalebi and pastry. So imagine senior giving that away. So sometimes it Difficult. happens, senior has taken the junior's time. पूरे दिन ले लिया उसका उसको रगड़ा देते हुए. ठीक हाँ, है. So that junior will make sure that he is the one who is sitting in front of him in dinner, so that he has the last laugh. yeah. So that is like very good. फिर उसके बाद एक त्रिशूल ट्रेडिशन होता है. So अच्छा. now this tradition is like थोड़ा सा ये मतलब people will not like this, but this happens, and we are not ashamed of it. हम्म. India's con is like on Trishul. तो अगर कोई संडे सैटरडे को if a thing of beauty goes by, ओ. any beauty which is to be appreciated, हम्म. so six termer will come outside and he will say India's con Trishul, and all juniors first to sixth term, irrespective of where they are, irrespective of what they're wearing, they will come outside and they will observe that thing of beauty until it passes. Oh. So that is like a respect which we are aiming. Nothing, Yeah, nothing to got be it. offended here. Yeah, got it. फिर एक full name tradition होता है. Full name is like every person in India's con calls every other person by full name Every time. on official matters. अच्छा. Like अगर if some favor is to be asked, then they can say okay Simrat come here. But अगर कोई officially किसी को बुलाना है या किसी को एड्रेस करना है ऑर्डर्स में, तो पूरे नाम से ऑर्डर पूरा होगा. तो लाइक वन ऑफ माय जूनियर्स कॉल शियन सोमन्ना माचिंडापा नागपा. Oh my तो ऐसे God. जो लंबे लंबे नाम होते हैं. तो एक Yeah. श्रीलंका का बंदा था, तो उसका नाम माकू डायस रखा था. उसका नाम कुछ ऐसे था, मगप्पा गप्पा कटप्पा उदुपी डायस. तो It is very difficult to remember. माकू डायस. तो जो ऐसे नाम है और 120 कैडेट है, Oh. तो ऐसे नाम याद करने इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सिक्स टर्म और फर्स्ट टर्म, तुम्हें वो नाम याद नहीं करना है. तो दैट इज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग. सो एक जो हमारा सबसे प्यारा ट्रेडिशन है, लास्ट ट्रेडिशन, दैट इज मूवी ट्रेडिशन. अच्छा. सो व्हाट एवर हैपेंस, आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए, इंडिया कौन मूवी जाएगी. अच्छा. कल तुम्हारा एग्जाम है, तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तुम चाहे भीख मांग रहे हो कि सर मेरे को मत भेजो, मैंने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, जाना पड़ेगा देखिए. तुम जाओगे मूवी के लिए. ठीक है. और तुम फेल होकर आओ लेकिन मूवी तुम जाओगे, और मूवी भी जाओगे और फर्स्ट रो में बैठोगे. ओह. तो फर्स्ट रो में बैठ के ऐसे देखनी होती है मूवी, बिकॉज everyone should know कि India's con has come to watch the movie. So that is very funny and kind of hysterical, but everyone knows कि कुछ भी हो जाए India's con जाएगी. और एक पूरा सेक्शन होता है वहां पे India's con ही बैठती है. तो इवन आर ड्रिल उस्ताद नो कि आज मूवी में India's con जाएगी पक्का. हैपेंस कि पूरी एकेडमी में सिर्फ India's con वाला ही कोई है, कोई नहीं आया, बिकॉज कल एग्जाम है. हाँ. तो एग्जाम से एक दिन पहले तो कौन ही से आएगा वहां पे, खासकर एनडीए में जब लास्ट मोमेंट पढ़ाई होती है सिर्फ. सो बट वो ये कि कुछ भी हो जाए मूवी ट्रेडिशन नहीं, काफी अच्छी, मुझे तो काफी अच्छी लगी ट्रेडिशन सारी. सो मैंने थोड़ा रिसर्च किया आप पे, तो आई फाउंड आउट कि आपकी प्रीवियस 5 जनरेशंस आर फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड. सो व्हाट आर द 5 लर्निंग्स यू हैड फ्रॉम देम, या कोई भी स्पेसिफिक लर्निंग्स यू हैड फ्रॉम देम? फर्स्ट इज लॉयल्टी. ओके. कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी कोई भी कुछ भी बोले गवर्नमेंट, लेकिन जो तुम्हारा जिसका तुमने नमक खाया है उसके साथ नमक हरामी नहीं कर सकते. तो जो तुम्हें ऑर्डर्स मिले उसको फॉलो करो, आपको पट्टी बांध के, कुछ भी हो जाए तो. सेकंड इज ऑनेस्टी. कि नेवर चीट एनीवन, स्पेशली इन दिस. गलत काम वो है जिसको करके छुपाना पड़े. करेक्ट.
तो कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे फैमिली नेम टार्निश होता हम्म है. एंड थर्ड इज इंटीग्रिटी. हम्म We always maintain the integrity and the name of the family, चाहे कुछ भी हो जाए, no matter what happens, no matter what the world says. हमारे फैमिली में दो प्रोफेशन ही अलाउड है जनरली, या तो सोल्जरिंग या फार्मिंग. अच्छा. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में if either you go to NDA or हम्म. either you become a farmer. So I was lucky that got, Oh, I you got got clear. through NDA, and Hmm. even my father is from NDA. My grandfather, he is from OTA, but अच्छा. before that he joined the army as a jawan. हम्म तो जवान पहले फार्मिंग में कर रहे थे, फिर जवान बन गए, फिर जवान से वो सोल्जर बन ऑफिसर बन गए. हम्म. And before that, my great grandfather was in Azaad in fauj. So he अच्छा. was in commissioned in 16 cavalry, and he was posted in Burma. So बर्मा हम्म. में नेताजी का मैसेज आया कि अगर किसी को देश के लिए लड़ने का शौक है तो आ जाओ. हम्म. तो वो अपनी यूनिट से भाग गए, ओह. और भाग के वो इधर चले गए, आजाद इन फौज ज्वाइन कर लिया उन्होंने. अच्छा. एंड he came back. He was few years. He spent few years in jail, and he came back after independence. Or POWs were left. So what happened was कि आजाद हिंद फौज जब वापस आई तो they were separated by colors. कि ये हम्म. रेड है, मतलब रेड cannot, रेड इज लाइक थोड़ा सा पार्शियल है इसका जोश में, इसने गलत स्टेप उठाया. व्हाइट इज लाइक कि इसको तुम वापस वी कैन टेक इन ब्रिटिश आर्मी. एंड ब्लैक इज लाइक जो कट्टर, दे आर लाइक कि अभी भी कोई हाथ सामने ब्रिटिशर मिल गया तो उसको मैं जान से मार दूंगा, ऐसा करके कुछ कलर कॉन्सेप्ट था. आई एम नॉट श्योर दो, बट ऐसा कुछ था. तो माई ग्रेट ग्रैंड फादर वॉज लाइक ब्लैक. ओह. एंड ही वॉज सेंट टू जेल. और फिर फ्रीडम जैसे ही हमारा खत्म हुआ स्ट्रगल 47 में भी got independence, so he was called back. And but his mental state was never the same because he had seen so much violence. हम्म. World War II देखी, World War II में इतने सारे campaigns देखे. फिर उसके बाद he joined Azaad in फौज. वहाँ हम्म. पे almost all his friends died for the country, and most of them died from things like malaria हम्म. and health issues. हम्म. So then he joined. He was taken to jail. So all that mental trauma was there, and he was never the same. हम्म. So yeah, these things happen. But at the end of the day, तुम लोगों को बोला जाएगा कि it's your job. You have to do it हम्म. because अगर सब लोग ये सोचेंगे कि मेरा बेटा नहीं तो फिर किसका बेटा जाएगा फौज में. हम्म. तो हमारी फैमिली का लिटरली एवरीथिंग इज लाइक दैट ओनली कि you have to go, you don't have any other option. But it is never forced. Generally it is put inside you. See, this is why you have to serve your country. हम्म. And I'm also related to Brigadier Lakhbinder Singh. So हाँ. he was my chachu who passed away in air crash. So हम्म. these things happen. We have seen coffins at our home. We have seen medals. हम्म. Whenever someone has gone to receive the medal for the fallen one, he has always had that smile on his face. He हम्म. did his job. So that is what is expected out of you, and that's what our family has stood for always. आई हर्ड कि सर बिपिन रावत जो हैं, मतलब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, लाइक विद हिज वाइफ, एंड आपके चाचू भी थे लाइक उसमें. तो क्या आपकी कभी अपने चाचू से डायरेक्ट बात हुई है कि उनका कोई एक्सपीरियंस हो विद बिपिन रावत सर, जो लाइक काफी खास एक्सपीरियंस हो जो आप शेयर करना चाहो? Yeah, so मेरे चाचू was there in that unfortunate incident, हम्म. and he was, I think, he was traveling with General Bipin Rawat as part of his team member because he was posted with him only. And हम्म. he always had praise for the CDS, and he never said ill about anything. हम्म. Very competent officer, always did what was on his mind, and never got pressurized under any situation. हम्म. Decorated भी थे, and war wounded भी थे. And his character was something which I always looked up to since my academy days. Uh,
when I was in my academy, like we were always given example. Here, General Bipin Rawat got relegated. He Hmm. got relegated because he had fear of swimming. So he got अच्छा. relegated in jump. So वहाँ पे ना jump is compulsory. What is jump now? स्विमिंग पूल के ऊपर एक डाइविंग बोर्ड रहता है तो 7 मीटर 10 मीटर जंप्स होती है वहाँ पे. So Okay. he refused 7 meter jump in fourth term, if I'm not wrong, and because he was a weak swimmer and he got relegated for that. And then he came back. Hmm. He worked on his swimming. अच्छा. He did the dive, and then he passed out with flying colors, getting the Hmm. sword of honor in Hmm. IMA. So that is the kind of character that we have always looked up to. Hmm. For my chachu, I would say he was a gem of a person. He got through for Major General rank, Hmm. and he was set to command division there in Hmm. Jammu Kashmir. Hmm. But fate had other plans, and Hmm. we all look up to Gitika Chachi and Ashna, Hmm. how strong they are in these testing times. Hmm. And they have always been our role models, especially Gitika Chachi. She has literally raised me when we were in Wellington, and always loved me. And Tony Chachu was always like a fatherly figure to me. I Hmm. will always remember what he did for me and what all I learned from him. Um, Hmm. he will always be there in our hearts. आपके कुछ दोस्त हैं, लाइक आई वुड से जूनियर्स हैं, इंडियन आर्मी स्कूल पटियाला से, जो कि जिन्होंने आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी है, जपन और द्रोण, इफ यू रिमेम्बर. सो दे हैव विटनेस्ड योर जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. सो एज अ किड आपका क्या माइंडसेट था जब आप वो फिटनेस जर्नी के दौरान थे स्कूल में? Yeah. So I was in 11th, 12th, and academically inclined था मैं थोड़ा because very weak in studies. So naturally left all sports वगैरह behind. I was national level golfer till my 9th, 10th, हम्म. and I used to play lots of sports. But फिर 11th में 12th में आके सब छूट गया. हम्म. And when मैं 12th में जब तक पहुंचा तो मैंने देखा यार मेरा वेट तो बहुत ज्यादा ही हो गया. 130 kg का हो गया था मैं. I have a 130. tendency to ओके. put on weight quite fast. So हम्म. उसके बाद अब आर्मी में जाना था क्योंकि बचपन से सपना देख रहा था लेकिन लास्ट 2 इयर्स के वजह से कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए कि नहीं हो पा रहा था. तो टाइम नहीं मिल पा रहा था. फिर उसके बाद आई डिसाइडेड नहीं बॉस दिस इज नॉट हाउ थिंग्स विल वर्क. सो 30 kgs आई रिड्यूस्ड बिफोर गोइंग टू माय एसएसबी. तो आई वेंट विद फॉर बिकॉज स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से था तो नेचुरली पता था कि कैसे करना है. करेक्ट. तो उसमें ज्यादा इशू नहीं आया बट फिर किया एंड एसएसबी किया क्लियर किया. तो हम्म. वहां पे भी 100 kg का था मैं. अच्छा. एंड मेडिकल एनसीओ साहब ने बोला कि साले तेरे को 28 kg कम करना है, तेरे को 28-30 kg कम करना है तेरे को अच्छा. नेक्स्ट 42 days में. 42 days में. तो हाँ. ओके. फिर उसके बाद अब मेरा सपना था पैशन था कि हम्म. कुछ भी हो जाए मेरे को जाना है. अगर मेरे को पैर भी काटने को बोलेंगे मैं काट दूंगा क्योंकि ओके. चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को जाना है. हम्म. तो मैंने अपना मतलब मेडिकल से आया दिल्ली गया घर वालों से मिला थोड़ा. उन्होंने वही मतलब हग वग किया और प्यार किया कि ओ वेरी गुड बेटा रिकमेंड हो गए. हम्म. और फिर मैं डोमिनोज गया और तकरीबन अच्छा. 5-6 हजार का बिल आया होगा मेरे को उस रात. और अच्छा. मैंने जितना पॉसिबल था मैं खाया जितना भी एक इंसान खा सकता है मैंने खाया. अच्छा. और फिर उसके बाद मैंने बोरिया बिस्तर बांधा अपना और मैं देहरादून चले गया. अच्छा. देहरादून में देहरादून में अपने दोस्तों के साथ था रुका हॉस्टल में. एंड वहां पे ही उनके कॉलेज हमारे कॉलेज में जो बाहर एक वो था प्ले ग्राउंड जैसा कुछ था. तो हम्म. ऐसे एक रूटीन बनाया अपना बड़ा क्रेजी सा रूटीन. आई वोंट सजेस्ट इट टू एनीवन. ठीक है. आई ऑलमोस्ट डाइड इन कपल ऑफ टाइम्स अगर बट किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा. तो हम्म. आई यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग. पानी पीता था गर्म पानी. एंड उसके बाद मैं 5 किलोमीटर भागने जाता था. हम्म. एंड आई यूज्ड टू वियर लाइक 4-5 layers ऑफ क्लोथिंग ताकि जितना पसीना मैं निकाल सकूं. और मैं भाग के आता था और मेरे पास एक सैनिक सूट घोड़ा खाल का आदमी था तो वो मेरे ऊपर ब्लैंकेट रखता था अच्छा. ताकि मैं और पसीना निकालूं. फिर हम्म. उसके बाद मैं एक ऑमलेट खाता था. हम्म. और ऑमलेट के ऊपर मेरे को थोड़ा मिर्ची पसंद थी तो मैं वो मिर्च मिर्च डाल के खाता था. हम्म. और फिर उसके बाद लंच में आधा एप्पल खाता था. हम्म. और फिर भागने जाता था. फिर लंच के टाइम 5 किलोमीटर
फिर वापस आता था, ब्लैंकेटिंग होती थी मेरी। हम्म फिर डिनर के टाइम जो आधा एप्पल बच गया वो ही खाता था, हम्म और थोड़ा सा सोने से पहले दूध पी लेता था, हम्म आधा ग्लास, ज्यादा नहीं, और हम्म डबल टोन। फिर उसके बाद शाम को भी भागने आता था 5 किलोमीटर, तो दिन में 15 किलोमीटर आई वॉज रनिंग। हम्म एंड विद दोस काइंड ऑफ लेयरिंग हमेशा भाग के आता था, तो मेरी ब्लैंकेटिंग होती थी। और हम्म फिर उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट डिनर लंच में ही रहता था। समटाइम्स मेरे को शुगर लेवल काफी ड्रॉप हो जाता था, काफी वीक लगता था, तो मैं ग्लूकॉन डी या टैंक पी लेता था, एक बॉटल हमेशा अपने साथ रखता था, उसकी छोटी छोटी सिप्स दिन में लेता रहता था। अच्छा रात को पेट बहुत दर्द होता था, नेचुरली पेट में कुछ जा नहीं रहा था, तो हम्म पेट पे कपड़ा बांध देता था। हम्म और कुछ समझ नहीं आ रहा था उस समय क्या करना है, क्योंकि टारगेट बहुत इम्पॉसिबल जैसा लग रहा था। हम्म But just kept my head down and kept on losing, हम्म, and I took it till 78 तक ले गया था मैं अच्छा 100 से। हम्म और I reported there, तो डॉक्टर said कि okay, I give you one more week। कुछ हुआ, he had to go somewhere, कुछ हुआ, and he gave me one more week, he had to go on a leave या कुछ ऐसा हुआ कि अगला डॉक्टर नहीं था। So हम्म they said कि luckily your son, you have got 1 week now। So हम्म God was also played a huge role in this. He has हम्म given me that 1 week। हम्म And फिर उस 1 week में I tried a lot, but I had heavy bones, हम्म and muscle mass was also there, I had lost lots of muscle, but लेकिन still heavy bones था, और कुछ कम नहीं हो रहा था ज्यादा, तो 76 तक लाया मैं। हम्म And I didn't know what to do, हम्म, and there was only 1 day left now। अच्छा और 1 day था, and I had to do 4 to 6 kgs more। तो हम्म मैं बड़ा दुखी था, स्विमिंग करके आया था, एंड जस्ट टू रिलैक्स माई मसल, स्विमिंग करके आया था दिल्ली में। हम्म, एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तो वहां पे एक बॉक्सिंग कोच मिल गया मेरे को, इंडियन आर्मी का। अच्छा उसने बोला क्या हो गया तेरे को, हाँ तो मैंने उसको बताया पूरी बात। हाँ तो बोलता अभी कितना टाइम है, तो मैंने बताया उसको, सर 18 घंटे है मेरे पास मेडिकल के लिए। हाँ तो बोलता है जा घर जा, जो अपने वुलन क्लोथ्स हैं उनको लेकर आ, और मेरे को यहीं पे मिल। अच्छा फिर मैं लेकर आया, और मेरे को उन्होंने सोना बाथ में डाला, अंदर बाहर अंदर बाहर। एंड फिर वाटर कटिंग नाम की चीज होती है, बॉक्सर्स करते हैं, अच्छा एंड रेसलर भी करते हैं। सो वाटर कटिंग किया मैंने, एंड 6 kg फिर वाटर निकाला। डिडंट हैड एनी वाटर लास्ट 1 day, ओ, नो फूड लास्ट 2 days। ओ, एंड लॉस्ट सॉल्ट, एकदम लॉस्ट सॉल्ट, तो आई डोंट रिमेम्बर ओनली इफ आई हैड इन एवर दैट टाइम। हम्म एंड वो फिर लास्ट के मेरे साथ हमेशा एक बंदा रखा हुआ था उसने सोना में, ताकि मैं बेहोश हूं तो ये मेरे को जगा दे। हाँ हाँ और मैं ऐसा होता था कपल ऑफ टाइम, पास आउट, फिर मेरे को बॉटल चढ़ती थी, फिर हम्म, वापस मेरे को अंदर भेजते थे। फिर ओ, आइस मुंह में रखता था, क्योंकि कुड हैव वाटर, तो आइस मुंह में रख के आई यूज टू हाइड्रेट काइंड ऑफ। हम्म एंड फिर मैं वहां पे गया मेडिकल के लिए। एंड वहां पे लाइक डॉक्टर हैड गॉन क्रेजी नट्स कि भाई इस बंदे ने कैसे 30 kg कम कर दिया 48 डेज में। हम्म एंड फिर उसने मेरे को बोला, खाल से तू पागल है, हमें पागल खाल से ही चाहिए फौज में इस समय, तू जा आर्मी में जा। उसने मेरे को फिट करके भेज दिया। अच्छा एंड जैसे ही मैं बाहर गया मैं बेहोश हो गया। ओ फिर मेरे को ड्रिप लगाई गई, और वही डॉक्टर ने ड्रिप लगाई गई। तो बोलता साले खाल से तू अब यहाँ पे दिखियो मत मेरे को। ओ और माय फिर मैं गॉड बाहर गया, तो मेरे को बहुत प्यास भी लग रही थी, तो फिर मैंने सबसे पहले, एक गार्डनर था वो पानी दे रहा था, हम्म तो उससे मैंने पानी पीना शुरू किया, वही पाइप से। फिर वहां पे बेस हॉस्पिटल में एक अमूल की डेयरी होती थी उस समय, अभी पता नहीं है या नहीं। तो अच्छा वहां पे गया मैं, एक कार्टन भर के मैंने फ्लेवर्ड मिल्क पिया, ओ और फिर सारा उल्टी में वो बाहर आ गया, मैं फिर बेहोश हो गया। ओ फिर उसके बाद मैं घर आया, अपना ड्रिप लेकर, एंड धीरे धीरे फूड इनटेक बढ़ाया, वाटर इनटेक बढ़ाया, हम्म पूरा मतलब साइंटिफिक था इस बार। हम्म एंड बट दैट हैड टू बी डन, और कोई ऑप्शन ही नहीं था, और कोई ऑप्शन नहीं था, कोई भी, ये कोई पॉसिबल नहीं है साइंटिफिकली। तो हम्म बहुत क्रेजी चीजें करनी थी टू गेट देयर, बहुत क्रेजी। हम्म एंड आई एम ग्लैड आई डिड दैट। सो या। काफी ऐसा था, लाइक मैं खुद ऐसा फील कर रहा था जब आप अभी शेयर कर रहे हो ना कि मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये सब सो या सो लाइक 3 फेजेस होते हैं जितना मेरे को समझ में आता है कि एक तो वो लाइक जब हम एनडीए एग्जाम देते हैं, रिटन एग्जाम वगैरह, देन जो ट्रेनिंग वाला फेज है, देन जो एक्चुअल फील्ड में जाना।
अब उसके बाद कई लोग होता है कि कुछ एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, कुछ स्टार्टअप वगैरह में चले जाते हैं. सो सिंस यू आर ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर नाउ, आपका स्टार्टअप भी है एंड साइमल्टेनियसली यूट्यूब चैनल भी है. So how was your thought? Like, how did you thought of becoming an entrepreneur from an army person? So I came outside and I had great health issues, showed myself in hospital, and still my compression fracture had not healed in my spine. I had I suffered from compression fracture in my academy only. So अच्छा. बाहर आके वो heal नहीं हो रहा था, rib भी hairline fracture था. हम्म. So doctor told me complete bed rest, and I went on bed with heavy medication. That's why I gained a little weight. फिर हम्म. उसके बाद then I start like everything became started becoming normal, and that time I got a call from one of the guys. His father, he passed away हम्म. in Kargil, and he was saying कि सर मैं afford नहीं कर सकता हूँ आर्मी के लिए, and I अच्छा. want to go. I want to serve my father's paltan. Now I could see that passion, हम्म. same passion which I had in my eyes, in his हम्म. eyes. हम्म. So I said, चल ठीक है, let me see मैं क्या कर सकता हूँ. And I started making him prepare for the SSB. He had cleared written. तो अच्छा. SSB के लिए काफी मैंने उसको माथा पच्ची की, दो दो महीने सिर्फ उसी के साथ टाइम स्पेंड किया, हम्म. and he got through. हम्म. So हम्म. I realized कि यार ये तो बहुत अच्छी फीलिंग है, ये फीलिंग बहुत हम्म. अच्छी है. किक. तो हाँ, कि अच्छा. मैं जो स्टार्स नहीं ले पाया वो ये बंदा ले लेगा मेरे नाम के. हाँ. तो फिर मैंने एक इंस्टा पेज बनाया कॉल्ड इंजन सिंह. हम्म. तो अच्छा, इंजन इज लाइक ऑल कैडेट्स ऑफ इंडिया स्क्वाड्रन आर नेम्ड एज इंजन. ओके. कॉल्ड हमारा मैस्कॉट है इंजन. हम्म. तो मैंने इंजन सिंह करके बनाया, एंड उस पे आई स्टार्टेड राइटिंग लिटिल ब्लॉग्स, कुछ अपनी फोटोज डालता था, हम्म. एंड उस पे काफी प्यार आया, काफी ज्यादा. मतलब विद इन आई थिंक कपल ऑफ मंथ्स आई हैड अराउंड 4,000 फॉलोअर्स. हम्म. सो एंड ऑल नेचुरल, ऑल ऑर्गेनिक. हम्म. तो मुझे लगा कि यार ये चीज है जो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं. हम्म. फिर उसके बाद आई स्टॉप राइटिंग ब्लॉग्स देयर, हम्म. बिकॉज आई थॉट कि इंस्टाग्राम इज नॉट द राइट प्लेस फॉर इट. एंड फिर मैंने इंस्टाग्राम पे फोटोज और मीम पे स्टिक किया, एंड आई वेंट टू यूट्यूब. तो अच्छा. यूट्यूब पे आई मेड दिस चैनल कॉल्ड फौजी शो. हम्म. So luckily, I had come from a privileged background, so I decided कि I will not take any earnings from YouTube. हम्म. So even the promotion जो मेरे मेरे चैनल पे now people have started coming to promote. तो हम्म. मैं उन्हीं को प्रमोट करता हूँ जिनका चीज मेरे को अच्छा लगता है, जो मैं यूज करूंगा अगर मैं स्टूडेंट होता. हम्म. और वो सारा कॉस्ट मैंने उनका डील कर रखी कि आप यू स्टार्ट गिविंग टू भारत के वीर फाउंडेशन, हम्म. जो हमारा गवर्नमेंट इनिशिएटिव है. सो आई इट्स नॉट माय इनिशिएटिव, बट आई रियली कनेक्ट विद दैट बिकॉज आई वांट टू वर्क फॉर द वेटरन्स. आई हैव ऑलवेज थॉट माय सेल्फ ऑफ डूइंग दैट. हम्म. सो या आई मेड दैट चैनल, एंड आई थिंक सितंबर में मैंने बनाया लास्ट लास्ट ईयर, हम्म. एंड नाउ एज ऑफ जून उस हम्म. पे 19,000 सब्सक्राइबर हैं. तो ओह. फर्स्ट ईयर के हिसाब से इट इज लाइक क्वाइट ओके, बिकॉज फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज टफ ऑन यूट्यूब. सो उस पे भी काफी प्यार आया. पीपल शावर्ड लॉट्स ऑफ लव, हम्म. अफेक्शन, हम्म. एडमिरेशन, हम्म. एंड फिर उसके बाद आई थॉट कि इसको थोड़ा लार्जर स्केल पे, पहले मैं इनिशियली फ्री में कर रहा था, बट देन आई सॉ कि पीपल थिंक कि ये वैल्यूएबल नहीं, यू लूज इट्स वैल्यू इफ इट्स फ्री. सो हम्म. मैंने बहुत ही मिनिमम रेट पे आई स्टार्टेड लाइक 500 पे. आई स्टार्टेड टेकिंग किड्स फॉर अ मंथ, 2 वीक्स एंड ऑल. हम्म. फिर उसके बाद I completely stopped it, and I went with More Sir. So Yash More Sir, original Yash More Sir, he contacted me, and we collaborated, हम्म. and I joined this course called BOEC. So it's like Basic Officer Aspirant course. ओके. So I'm a faculty there, and it's like kind of a partnership only of me and him. हम्म. And I really, admired him from my childhood because he was also posted in Babina, and his wife was my teacher. So I admired him, and connected with him, and now I'm working with him.
Recently I've made my website called faujiacademy.com. So Yeah. for now तो उस पे सिर्फ current affairs की we have made a magazine because people have stopped reading newspapers, Hmm. and we have got in touch with a doctor Hmm. for a defense. He's a defense medical specialist. So so that people can solve their doubts. Hmm. But in coming few months, we have all the written courses lined up and Hmm. all the SSB courses lined up. Okay. So you can see, fully functional. My startup will be fully functional around 6 months. Hmm. So we are just working like slowly because we want to crack and work more in building the trust with our audience. Hmm. But मोर ऑफ ऐसा स्टार्टअप का ऐसा कुछ कल्चर नहीं बनाया मैंने. मोर ऑफ एन रिलेशनशिप विद एन ऑडियंस Hmm. वेयर दे कैन रिलेट विद मी, एंड आई कैन ग्रो दैट रिलेशनशिप. फिर Hmm. उसके बाद आई हैव सम थिंग्स इन माइंड कि Hmm. एक्सेसिबल प्रोफेशनल नॉलेज टू एवरीवन, बिकॉज आई सीन कोई बंदा रिकमेंड भी होके आता है बाहर से या रिटर्न भी फेल, रिटर्न सिर्फ रिटर्न भी क्लियर होके आता है, तो Hmm. ही जॉइंस यूट्यूब. सो आई Hmm. मेरे अकेडमी का यही है कि प्रोफेशनल जो बंदा है he only teaches you, not Correct. any Tom, Dick and Harry. So Correct. that is like one of the objectives. Hmm. And let's see, 6 months hai abhi, so let's see where it goes. And but my more of focus is on my health only now, and this is all just a part-time gig which I'm doing, to be very frank. Okay. So I have a question from my friend which I would like to ask here. So he's saying, ki, is India really capable of handling China on its own, or do we need US or UK on our side? काफी भारी question. That's why I. So, you know, India might not have the numbers to fight China. Okay? We might not have the best of technology. Hmm. We might not have the best of the aircrafts. We might not have the best of the aircraft carriers. But Hmm. what we have is our men. Hmm. इंडिया की ताकत उसकी फौज है, जो Hmm. एट द एंड ऑफ द डे जो बंदा ऑन ग्राउंड लड़ने वाला है ना. Hmm. बिकॉज अगर आप देखो, अगर मोटिव देखोगे, तो हमने Hmm. अपनी कंट्री को अपनी माँ का दर्जा दिया है. Correct. So we have literally nothing to lose. Hmm. And when any troop goes into battle, so they are like कि करो या मरो. Hmm. ठीक है? Things have changed a lot since 62. Hmm. 62 was a big blunder politically, military rather. Hmm. Both of them. Hmm. And things have changed a lot. Political leadership has also changed, Hmm. and military leadership is not like what used to be there in 62. So yes, we can take China without any help required. But the question is that if China opens up front, will Pakistan keep shut? So Hmm. Pakistan will also go. And handling a two-war front is Hmm. always a tough job. But Correct. in today's case, I would also like to say that China, they had initiated this policy called one child policy. Okay. So वहाँ पे गए सब लोग घर में काफी पैम्पर्ड है, वन चाइल्ड. Hmm. ठीक है. So they are not that toughies. We have seen this in Galwan Valley clash. We have seen this in all the skirmishes which is happening. Hmm. They are not toughies. They can't handle what our troop can handle. हमारा जो troop है वो गांव से उठ के आता है, फार्मिंग बैकग्राउंड का है. So Correct. you can't defeat that kind of mentality. You can't defeat that kind of mentality. हाँ तुम शायद से एयरक्राफ्ट बेटर होंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर बेटर होगा, लेकिन you can't defeat the people. So Hmm. this, and also in a stage like this today, Hmm. things like full blown war between two nuclear countries, nuclear Hmm. power countries, Hmm. is very tough, very very tough. Hmm. Full blown war, I don't think will be possible. They will stick to hybrid warfare like cyber, Hmm. or counterinsurgency, Hmm. or things like counterfeiting the currency, or Hmm. terrorism, Hmm. supporting Pakistan so that they can still do cut India by 1,000 cuts. Hmm. So that is what kind of warfare they will play. Space warfare. So Hmm. they really have to go information warfare. So information warfare, तो we are suffering as it is. But धीरे धीरे ये जो full blown war का concept है between two nuclear power countries, it is very tough, Hmm. very tough. Easier said than done. Uh,
if China, you know, it is not stupid, because China में क्या होता है, Hmm. वहाँ पे they are very strong, they can't accept failures. Hmm. If you see their history, if a leader fails, then he goes, and Hmm. Xi Jinping knows this. Hmm. So he is also not stupid that he will go into a full blown war with us. So Correct. full blown war is not possible as of now. But yes, if a war happens in future, yes, we can handle them definitely, for sure. We have that kind of technology. We have that kind of men, most importantly, because हमारा जो soldier है बहुत well trained है, Hmm. constantly courses होते हैं, Hmm. and also when you go up there, you have the units Paltan, Paltan's Izzat, which you are fighting for. Hmm. So you know, uh, it is not that easy to defeat, and we can easily fight them. Okay. Okay. So as I researched a little bit, I found out that कि 3 साल like पहले अपन एनडीए रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं, देन 3 साल का ट्रेनिंग, देन एसएसबी, देन उसके बाद हम वॉलेंटियर कर सकते हैं स्पेशल फोर्सेस के लिए. सो व्हाट इज दिस कि वॉलेंटियर करना, लाइक कौन कर सकते हैं उसमें वॉलेंटियर, या क्या माइंडसेट चाहिए उसके लिए जो हमने वहां पे फेस नहीं किया पूरे स्ट्रगल में. So you give your SSB, first you give your written SSB medical merit, and then you join the academy if you're in the merit. So Okay. academy में 3 years रगड़ा मिलता है एनडीए में, 3 years training कह लो उसको. Then 1 year in IMA for ex-NDAs. Then when you are in IMA, in the last month तुम्हारा एक screening test होता है वहाँ पे. Okay. So all those who are willing and wanting to go to special forces, para, they sit there for that screening test. So उसमें chin ups, run test, काफी कुछ होता है उसमें, ठीक है, physical, it's all physical. So उसमें से लोग छांटे जाते हैं for para probation. Okay. And then there are allotted para regiments कि आप इसमें कमीशन होगे, लेकिन आपको क्या बोलते हैं, आप कॉम्बैट्स में कमीशन हो गए. तो आप देखोगे अगर पीओपी की फोटोज, तो बाकी लोग सब ओजी पहनते हैं, लेकिन जो पैरा वाले होते हैं दे वियर कॉम्बैट्स, सो दे डोंट वियर ओजी. सो आप यूनिट जाते हो एंड यू डू योर प्रोबेशन. इफ यू आर एबल टू क्लियर इट, देन यू स्टे इन पैरा, वरना अदरवाइज यू आर गिवन एन इन्फेंट्री रेजिमेंट व्हिच इज योर पेरेंट रेजिमेंट. सो व्हाट हैपेंस इज कि जब पैरा का कैडेट कमीशन होता है, so he is given a parent regiment which is a infantry regiment. It can be Jat, it can be Bihar, it can be Assam, it can be Gorkha, anything. So वो एक parent regiment मिलता है, and if he is not able to clear the probation, so he will go to that parent regiment. So first 90 days para probation होता है, and उसमें you are tested. पहले they will go to special school, special forces school, and फिर वहां से they will go to the Paltan for 90 days more if they are in special forces. तो पहले एयरबॉर्न का you can say to be in layman language 90 days का पैरा एयरबॉर्न का प्रोबेशन चला, फिर 90 days का स्पेशल फोर्सेस का चला. तो यूनिट में जाके if they feel कि हाँ भाई बंदे में दम है, उसको they give the maroon beret. And sometimes it also happens कि people complete their probation and they're not marooned because there is something called gelling. So if they think you're not able to gel with the troops, if you have some attitude issues, then also you can be rejected even after completion of probation. Oh. So that, and the mindset, so what I have seen, because I have not gone through probation, but I have seen my postmates who have gone through the probation. So first of all is passion, कि अंधा passion for the maroon beret, यार कुछ भी हो जाए तो चाहिए. Second is believe in yourself always, भाई कुछ भी हो जाए मैं कर सकता हूँ, the best. And third is little like a maverick, थोड़ा पागलपन, थोड़ा सनक. I would say सनक is a good word. थोड़ा सनक चाहिए, because it is not like a conventional army. It is not like normal. You are special. वो एक special forces की जो special लिखा हुआ है. So special यही है कि कुछ ऐसा करना जो ना कोई कर पाए ना कोई सोच पाए. तो उस लिमिट तक पुश करते हैं आपको कि आपको डेथ
जो our instructors like my divisional officer was from 4 para, so he used to tell us कि तुम्हें death से if death is at 20 तुम्हें 19 तक ले आएंगे और फिर छोड़ देंगे. Oh. समझ रहे? So that when death comes to you it becomes very normal और तुम में से वो डर ही निकल जाए. हाँ, डेथ का डर ही ना. तो ऐसे 19 तक ले आएंगे so that वो डर ही निकल जाए. That is बेसिकली जो ट्रेनिंग हमारी इनिशियल फेज में हुई थी, इट वाज जस्ट अ इंट्रो लाइक फॉर देम. बाद में जाके फिर वो नेक्स्ट लेवल एडवांस कर देते हैं. ओके, सो आई हर्ड एक आई गेस ट्रेडिशन होती है एनडीए में ही कि हर एक बंदे को एक लेडी के साथ आई गेस टाई कर दिया जाता है या क्या कर दिया जाता है. आई डोंट नो रिमेम्बर द टर्म, बट या, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ दैट? यू गॉट द क्वेश्चन? I got the question. I think it's somewhat related to NDA Ball, if I'm not wrong, right? Yeah. So क्या होता है NDA Ball में now what happens is कि तुम्हें या तो तुम अपनी पार्टनर ले आओ, या तुम्हें तुम्हारे डिविजनल ऑफिसर्स तुम्हारे लिए पार्टनर सेटअप कर देंगे. Right. But some generally what happens is कि people get it formed to go stack without any partner because at the end of the day they want this time to be celebrated amongst postmates because they know कि अगर कोई पार्टनर आई तो उसको गेट पे लेने जाना पड़ेगा, फिर उसको समझाना पड़ेगा कि हाउ टू टॉक टू ऑफिसर्स and how to conduct yourself, and then you have to get them drink, मतलब you have to pamper them a little, and then you have to dance with them. But what cadet wants is कि the whole time he wants to stay with his postmates and जितना वो डांस कर सके पागलों की तरह, जितना उस मोमेंट को एंजॉय कर सके, because 3 साल से उस चीज के लिए दे आर सीइंग कि अब आएगी बॉल, अब आएगी. सो लोग नहीं चाहते कि कोई पार्टनर हो, लेकिन हाँ जब पार्टनर आती है तो उसके लिए तुम्हें बताया जाता है कि हाउ टू टॉक टू गर्ल्स बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल. 11 साल हो गए इफ आई एम नॉट, हाँ 11 साल होंगे बिकॉज 7 years in school, then 3 years in India, 1 year in IMA. So 11 साल से they have not that proficient in talking to girls, so काफी घबराते हैं. So वो घबराहट निकालने के लिए एक 2-3 दिन का जैसे कोर्स चलता है एनडीए में, तो उसमें तुम्हें सिखाया जाता है हाउ टू डांस, बॉलरूम डांस कैसे करना है, हाउ टू बिहेव योरसेल्फ इन दिस गैदरिंग, तो वो सब सिखाया जाता है. बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट कैडेट वांट्स टू डू डांस विद हिज पोस्टमेट्स. और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं तो कोरोना कोर्स से था, तो हमारा एनडीए बॉल ही नहीं हुआ था. अच्छा. We were not NDA Ball course. So it was a very wonderful session. So I got a lot of knowledge, I would say. So जब हो रहा था like आप अपना experience share कर रहे थे, I was like कि मैं खुद experience कर रहा हूँ वो. So it was very nice to have a podcast with you. How was your? Thank you. Pleasure is all mine. Great, yeah, great. Always great having a great conversation. And मजा आना चाहिए बस. And I actually मतलब I saw your message on Instagram and then I thought कि यार इस बंदे में he's approaching me and I don't have the guts to approach people. Generally मैं सही बता रहा हूँ. And I generally feel कि यार मेरा चैनल बहुत छोटा है अभी, मेरा चैनल बहुत छोटा है अभी और मैं लोगों को अप्रोच नहीं करता हूँ. So I saw your message and I thought कि यार ये बंदा सही है यार, मेरे को इस बंदे की तरह बनना है. तो अभी से I also learned a lesson from you कि no matter where your channel stands, if you can have a good conversation, just go to invite people. So I'm definitely looking forward to that. And also I saw a couple of the videos, so great conversation, and I always wanted a great conversation on a Sunday morning. So sorry for being late. I can understand what you are going through because I am in the same field and like just I hate it when people are late. ठीक है, I just hate it. But light चली गई and I was like यार ये अंधेरे में कैसे होगा. So उसके बाद then I shifted that time. So luckily light वापस आ भी गई and God has been kind. So thank you very much for having on your wonderful platform and looking forward to our next conversation few years after. जब मेरा YouTube चैनल थोड़ा और बड़ा हो जाएगा और हम दोनों प्रॉस्पर करेंगे इस फील्ड में. बिल्कुल राइट. सो हाँ, तो I want you to give a shout out to like, share, subscribe my channel.
So guys, please like, share, and subscribe this podcast, and you will see beautiful, great content over here. I am sure this is just the beginning, and keep on watching, keep on subscribing, keep on sharing. अपने दोस्तों को दिखाओ, सबको दिखाओ, उसको सब्सक्राइब करो अभी के अभी.